अभी हम ये चैंटिंग सुन रहे थे तो त्रियतन विवेचन, तो मुझे लगा कि जो इसमें हम बोलते हैं वही सब कुछ हम एक्चुअली कर रहे हैं। हमने चैंट किया कि 5 खंड के प्रति आसक्ति दुख का कारण है, ये भगवान ने समझाया। और इस संपूर्ण ज्ञान धारण करने के लिए भगवान ने अपने जीवन काल में बार बार श्रावकों को इसी प्रकार समझाया। तो यही हम कर रहे हैं। ये 5 खंड दुख का कारण है, इसको समझ रहे हैं। और किस प्रकार समझाया? भगवान ने कई बार श्रावकों की शिक्षा के इस भाग पर दर्द दिया। किस भाग पर? कि सभी खंड अनित्य हैं, सभी खंड अनात्म है। That's what we are actually trying to do. And to do it, यथा सखी यथा बलम मनसि करोमा अनुपति पजामा। ये महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा को मन में रखकर यथासति यथाशक्ति उसका पालन करते हैं। यही हम प्रयास कर रहे हैं बड़ी। इसलिए ये रिमाइंडर हमारे लिए हमेशा अच्छा रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हम चर्चा कर ही चुके हैं क्या करना है। पहले मुख्य बात, अभी हम रूप खंड की चर्चा कर रहे हैं कि सारे खंड आपस में जुड़े हुए हैं, रिलेशनशिप है, लेकिन एक एक करके समझने से वो क्लैरिटी आती है, ताकि हम एक खंड को ठीक से समझ लें, खासकर रूप खंड को, कि उसके क्या स्वभाव हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह से वो हमको बांधता है। तो उसको जब हम ठीक से समझते हैं तो क्लैरिटी आती है। जो अनंत लक्षण सूत्र है उसमें रूप का स्कोप काफी बढ़ा दिया जाता है। आपको याद होगा कि उसमें पहले तो वही भगवान सबसे पूछते हैं कि भाई रूप और बाकी खंड भी क्योंकि हमारे वश में नहीं है, हमको दुख देता है, कष्ट देता है, तो ये मैं और मेरा तो नहीं हो सकता, देवा नहीं। देन द अदर सीरीज ऑफ आर्गुमेंट्स, अनित्य है और जो अनित्य है वो दुखी होगा, और जो दुख है अनित्य है वो तो मैं और मेरा नहीं हो सकता। तो इस तरह से वो सारे भिक्षु एग्री करते हैं बार बार, ठीक है, बनते बिल्कुल वैसे ही है। एंड देन व्हाट डज ही टेल देम? तस्माति भिक्खवे यं किंचि रूपं। जो भी रूप है, कौन कौन से रूप? अतीता, अनागता, पच्चुपन्ना, पास्ट में थे, अभी हैं, भविष्य में होंगे। देन अज्जतं वा परिद्दा वा, मेरे अंदर मतलब ये शरीर, बाहर, बाहर के शरीर और बाहर के फिजिकल रूप, पेड़ पौधे पहाड़ नदी एवरीथिंग। ओलारिकं वा सूक्ष्मं वा, वो ग्रॉस है चाहे सटल है। सटल रूप कैसे होगा? जैसे हवा आ रही है जा रही है हमारे अंदर, तो सटल है। देन हीनं वा पनीतं वा, हीन मतलब जो बिल्कुल निम्न तरह के जैसे योनियों में पैदा हुए हैं, समझ लीजिए अर्थवॉर्म है, मच्छर है। पनीतंग मतलब देवता लोग, ब्रह्म लोग, वो लोग भी। या यंग दूरे वा संति के वा, जो बहुत दूर हो हमारे से, ब्रह्म लोक में हमें मालूम भी नहीं, या बिल्कुल पास है, हम सब आपस में एक दूसरे के पास। सब्बं रूपं, सारे रूप, इतने सारे उनकी गिना दी है, उनके सारे पॉसिबिलिटीज गिना दी ताकि कोई छूट ना जाए। सब्बं रूपं नेतं मम नेसो हम अस्मि न मेसो अत्ताति। किसी भी रूप को, कोई भी हो, पास्ट का, फ्यूचर का, प्रेजेंट का, पास का अपना एक्सीलेंट हीन, एवं यथाभूतं सम्मपन्याय दट्ठब्बम नेतं मम नेसो हम अस्मि न मेसो। ये हमारा उद्देश्य है कि हम ये समझना चाहते हैं, सब रूप, नथिंग इज एक्सक्लूडेड। मुझे याद आता अभी 2 दिन पहले जब वेनरेबल ज्योति धम्मो से बात हो रही थी तो वी हैड लॉन्ग चैट। इस सेड कि मैं जब लुंगपुर के पास गया
तो जान केबली ने बताया ही लॉस्ट हिज फादर, तो उनका रिप्लाई क्या था, मदर फादर आर ऑल अपीयरेंसेस। आई वाज शॉक्ड, क्या कह रहे हैं। दैट्स इट, दैट इज दिस स्टेटमेंट, नेतं मम नेसुहम अस्मि न नेसु अत्ता। It doesn't mean we don't care for them or don't respect them. It means that it means they are impersonal. So that's the kind of teaching which is being given to them. That's the scope of the teaching. So हम शुरू तो इससे कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे डायरेक्ट अनुभव में आता है, और जब हम इसको ठीक से समझ लेते हैं तो we can extend it. Yeah, same must be true of all other human beings, all other living beings, and must be true of these so-called non-living beings. So that's the scope, and we can easily see कि अगर हमारी ये सचमुच में अंतर दृष्टि जग जाए इस तरह की, how much relief it will give us, how much freedom from suffering it will give us. So getting this is for our inspiration, ताकि हमें समझ में आए यार इसकी स्कोप कितना ज्यादा है, इसका उसको ख्याल में रखते हुए let us practice in our own small way. Then we start from that small way and slowly the whole expansion will take place. क्या कर रहे हैं हम, अनुभव कर रहे हैं जिस किसी भी तरह से हम चाहें, शरीर का अनुभव कर रहे हैं, कैसे भी करें, किसी भी तरह से। मुख्य बात है हम अंतर मन अंदर की ओर ध्यान दे रहे हैं। ओपनेई को अच्छतंग वेदितंबो विन्योहि, दिस इज व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग। अपने भीतर खुद अनुभव करके देख रहे हैं, एंड इट इज टू बी डन इंडिविजुअली बाय ऑल ऑफ अस। हम रोज चैंट करते हैं, नाउ वी आर पुटिंग इट इनटू प्रैक्टिस। So just sit quietly and observe whatever comes into our observation, or we want to do forward scanning of the body, very fine, no problem. It's also equally good. And then we see the arising and passing away of phenomena and identify it as impersonal. कैसे identify करेंगे कि तो नेचर के एलिमेंट्स हैं जो अराइज हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, इसमें मेरा क्या है। So that's why we are doing this, to see these as related to natural phenomena. पांच महाभूत, चार महाभूत जैसे भी आप समझते हैं। नॉर्मली हमारी टीचिंग में चार को महत्व दिया जाता है। स्पेस एलिमेंट इज सीन एज नॉट कॉजिंग एनी डायरेक्ट फीलिंग इन द बॉडी, नॉट कॉजिंग एनी डायरेक्ट इम्पैक्ट। इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली। शांत बैठ के ध्यान करते हैं, और बीच बीच में जैसा प्रेरणा होगी वैसे थोड़ा बहुत निर्देश दे दूंगा। तो प्रेरणा हुई कुछ करने के, साइलेंटली मेडिटेट एंड देन till 56 हो गए, till about 6:45 we can meditate and then have any discussion on that. You can spend some time in reviewing क्या किया हमने, क्या अनुभव हुए। Anybody like to share? क्या ये बात और स्पष्ट हुई कि हाँ सारा जो हमारे जो विभिन्न अनुभव है वो इसी डोमेन के अंदर है, इन्हीं एलिमेंट्स का खेल हो रहा है जो कि प्रकृति का भाग है। So Dharsab, can I check now? What I'm noticing is कि जो mental आहार है, so to say, वो, sorry, there's an aircraft over us. जो mental आहार है वो कुछ तो bodily manifestation देता है, which sometimes is discernible, sometimes not, and that's in the nature of these four elements. That's fine, that's one. But ये भी हो रहा है now, and maybe I'm not catching it right, and that's why I mentioned this. ये भी हो रहा लगता है कि it also is ahar for some more mental activity. अब ये क्या चक्कर है? That is happening, like there are two, the same ahar is
ahar for two things, is it? For roop as well as for other mental processes, ऐसा है? And so should we assume that वो जो विज्ञान जागता है और अपने का विज्ञान के साथ रूप जागता है, does it mean that in addition to those 7 there is, so to say, this 8th now also? Is that how it is to be understood? Thanks. कोई भी अगर मन में भाव जागता है, so it has a तन्समुत्थानानं च रूपाणां, so that is one. But अगर हम उसको एक ऑब्जेक्ट बना के उसके ऊपर फिर प्रतिक्रिया करते हैं तो प्रपंच भी जागेगा. So that is the mental concomitant of it. If we are not able to see that thought as it is and not create any further प्रपंच. तो ऑब्जेक्ट है ही है. जैसे कि कोई शरीर पे अनुभव हो रहा है तो उस पर भी हम प्रपंच बना देते हैं, बन सकता है, आराम से बन जाता है, काम सामान्यता बनता ही है. कोई भी अनुभव हो रहा है, बहुत अगर पेनफुल हो रहा है तो प्रपंच बना देंगे, और प्रिय हो रहा है तो प्रपंच बन जाएगा. So that mental phenomena is constantly concomitantly happening. It depends on our sati and panya, whether we stop it, at what level we need to stop that. Yeah, that's okay. But so therefore that mental object gives rise to Vijnana and Vedana. Whether it goes ahead or not is a separate issue. But it also gives rise to Rupa. Is that how it's to be understood? I'm trying to get the technicality of it correct. जी जी. So that means it's कोई भी विज्ञान जागेगा, कोई भी विज्ञान, उसके साथ साथ रूप के ऊपर उसका असर होगा. It will condition the rupa in some way, mild or large. We may or may not be able to capture it. तभी जब उसके साथ कोई wholesome unwholesome tendency होती है, चेतसिक होता है तो पता चल जाता है. अगर माइल्ड नहीं है तो पता ही नहीं चलता क्या होगा, because effect is microscopic. But the thought itself, if it can become an object for next mind moment. Right. No, that I get. So it's actually 7 plus 1, so to say. Maybe it's not accurate technically. So it's 7 of those plus Roop. ये ऐसे अब लग तो ऐसा रहा है अब तो from this morning's observation. Is that right? It's not really right, because we are saying वहाँ पे तो हमको वो बताया गया ना कि जनरल स्टेटमेंट दिया गया, रूप का आहार समुदय और रूप समुदय. तो आहार के अंदर सारी चीजें आ गई, भौतिक भी और मानसिक आहार भी आ गए. तो वो इसका मतलब नहीं कि वो बात वहीं रुक गई और खत्म हो गई. जो जिसको हम आहार कह रहे हैं वो एक क्या कहना चाहिए, इट्स अ डेजिग्नेशन ऑफ दैट एज ए phenomena which is affecting the body in that sense. But that phenomena has its own individual characteristics. It will have so many other effects. Which is those 7 plus those 25 and 32. Yeah, it can create a whole prapancha. Sure. And as the prapancha goes on, body is also getting affected. Simultaneously, body will get affected. Because every prapancha is a vijnana which is arising. Additional ahar for Roop. Yeah. So Roop will always get affected. प्रपंच के साथ साथ रूप affect होता रहेगा. अब हम प्रपंच में घुस गए, हमने रूप को ध्यान नहीं देना शुरू किया, हम प्रपंच में भाग गए. So that's how the mind-body connection keeps on operating. Well, or you start working on the prapanch, but you're not so cognizant के रूप में भी साथ साथ कुछ हो रहा है. And so जब प्रपंच को हम में फंस गए तब तो रूप के बारे में मालूम होना almost impossible. तो अगर उस तरफ ध्यान चला जाए तो प्रपंच वही रुक जाएगा. Right. So now the point is कि this helps us see कि actually वो रूप की अपनी एक कहानी चल रही है जो कि हमें पता नहीं चलती है. That's the real issue in this. Yeah. That's right. It's an independent, self-driven, self-proliferating, self-propagating entity over which the so to say I has no real control, so to say. I won't call it self-propelling. I would say conditioned by everything.
Right. Conditioned by multiple factors. Multiple factors. Because that is a fact. Everything is conditioned by multiple factors and it has multiple effects. So this, when we call Vijnana as an ahar, it is only a designation in terms of its effect on Rupa. But it has its own qualities which हाँ, affect. उसका अपना एक अलग लाइफ साइकिल है जो और चीजें कर रहा है. चल रहा है, वो तो करता ही रहेगा. Right. इसलिए जो भगवान का वो है ना 6, उसमें पुरुषो शब्द के गए, छयो में इमम धातुयो पुरुषो. Very rarely Lord uses the word purusha because he's giving discourse to somebody. ये 6 धातुओं का ही खेल है सब कुछ, बाकी कुछ नहीं है. So the Vijnana is also put together as a kind of, this is everything. There's nothing beyond it. So when you see it in that sense, you can see the उसका आपस में interaction एक का दूसरे पे दूसरे का इसमें होता ही रहता है. रूप में कुछ अनप्लेजेंट फीलिंग हो गई तो विज्ञान उससे कंडीशन हो गया और उसने उसको एक देश का संस्कार साथ चलना शुरू हो गया. Yeah, it's only for learning sake कि इसको हम इतना देख रहे हैं, but actually you can see, yeah, sure, okay, I get it, very good. Actually तो सारे एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं. अब अगर हम सारों को देखना शुरू करें तो it will be beyond our capability. So we're seeing one, then we'll see another, then we'll see another, and then at the end, when we have got some more clarity on experiential basis, then we'll try and see whether we can figure out क्या हो रहा है. This whole drama of this world is essentially this. Yeah, because that's what happened today. वो रूप का focus था, but I could notice that it's also doing other things in the background with other mental factors. So then I was wondering what was wrong or what was happening basically, not wrong. Yeah, okay. Ahar is just a designation for its effect on the Rupa itself. So it's a ahar for that. So उस sense में उसका designation दिया गया. But the same mental factor is also doing other things. There are other conditionalities, 23 conditionalities more जो मृतिक पर ठाने पड़ी थी, उन सब में भी विज्ञान ऑपरेट करता है. So there, I also went into this kind of experience today. Some thought process started to occur, and after some time I realized that I'm in a thought process of this kind. And then I thought to myself whether it will be possible to kind of in some way map the emotions of that thought process into the bodily sensations of some kind. But that is obviously impossible because that thought process is too complicated. Even in single emotion, it may not be possible very clearly, let alone a thought process. As the sati becomes more and more sharp, it becomes possible. You can see that. But we may not be able to do it in real time. Actually, real time is बहुत मुश्किल है. But retrospectively देखे, ओ ऐसा हो गया. देखो, मेरा अनुभव ऐसा चल रहा था. And it happens in subtle states so frequently, and then कई बार तो शुरू में तो ऐसा लगता है इतना अच्छा आ रहा है. And मैं जैसे ही मैंने कहा what a wonderful experience, that damn thing collapses. And then you feel so bad. Oh my God, क्या कर दिया मैंने. Then you realize कैसे craving aversion rise हो रहा है on a thing which is not at all has any substantiality of any kind. Everything, even that is happening by itself because of some conditions that you have recently gone through. Because of our latent tendencies. Those latent tendencies play a part in our reaction to the experience. That's why those purification of those tendencies is needed for complete liberation. जैसे हम छठक सूत्र में पढ़ते आ रहे हैं बार-बार. एक मैंने कहना था आपसे कि कई बार क्या होता है कि ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे कुछ ऑटो सजेस्ट कर रहा है. क्या सजेस्ट कर रहे हैं? जैसे ऑटो सजेस्ट कर रहा है. एक ऑटो सजेशन का एक trying to experience something and then you feel okay, मैं पृथ्वी धातु को एक्सपीरियंस करता हूँ और फिर इस तरह से एक कुछ होने समझ में आता है. But the first thing is that mentally you are trying to
say it loud that this is what I will now Yeah. experience. Yeah, if you predict it, then of course. As if it doesn't, it is not something that is happening, you know, of its own. कि मैं ध्यान लगा रहा हूँ और मैं मुझे फिर experience हो रहा है. ऐसा मैंने feel नहीं किया. So then what we should do is we should stop all this process and do raise our concentration. तो उस समय कई बार ऐसा होता है. It is common of phenomena that people during meditation because we have been told ऐसी stage आएगी तो हम assume कर लेते हैं कि ऐसे आएगी. हाँ. और फिर वो कोशिश करते हैं उसको अनुभव करने की. तो उस समय सुझाव ये दिया जाता है कि आप ध्यान करना सब बंद कर दीजिए. आप सांस को देखिए 10 मिनट 15 मिनट, चित्त को खूब समाहित करिए and then relax. Don't forcefully scan the body. Yes. Don't I scan think- the body. Yeah, this happened yesterday. Exactly same thing happened. I relaxed. I just lied down, and at that time, I found that I was able to experience the Yeah. and the solidness of the body at many parts. Yeah, that But happened. हमारा sense of self इतना strong है ना that we want to create the experience and therefore it Yeah, is suggested you that's stop doing anything, just observe your breath, relax and just sit quietly. Don't do anything. No effort in scanning the body. Just sit and see what arises. right. Thank you. Sir, जी This- जी just want to ask, like अभी भंते जी ने कहा, I exactly don't know what the words were. It is not self-independent as such, right? It is interconnected. When you're talking about this 4 dhatus plus one of this consciousness, ये मनोविज्ञान की बात हो रही है, right? यहाँ पर because mind and matter interconnected, जो मन में जो विचार चल रहे हैं, तो वो शरीर पे हमें 4 धातुओं के we are experiencing it. तो मुझे एक और like I wanted to ask you is when you specifically when you had mentioned this bodily sensation, it is due to the reaction only this bodily sensation happens, right? it is a natural phenomena. No, Body- अगर आप रिएक्शन नहीं करेंगे तो इसका मतलब नहीं है कि सेंसेशन नहीं महसूस होगी. सर लास्ट एक आध बार जब मेरी डिस्कशन हुई थी और जब आपने शुरू की थी इस वासा पीरियड में विद रूप व्हेन यू स्टार्टेड I vaguely remember, maybe I have not exactly got the right point. जब आप बोलते हैं कि when we have this bodily sensations, you had mentioned it कि जब प्रतिक्रिया होती है तो then that I mean because we were doing everything together, vedana, feelings. right. जब प्रतिक्रिया होती है तो नया संस्कार जागता है. तो इसका मतलब नहीं कि जो फीलिंग हो रही है वो पहले संस्कार नहीं जागेगा तो फीलिंग नहीं होगी. बॉडीली फीलिंग तो होती ही रहेंगी बिकॉज बॉडी का अपना धर्म है कि वो उसमें उदय व्यय होता ही रहता है. समुदाय धम्मान वो अपना बिकॉज देयर इज नथिंग स्टैटिक हियर. दिस थिंग लुक्स स्टैटिक, इट इज नॉट, एंड दैट्स व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग directly. It's constantly changing. कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी भारीपन, कभी हल्कापन, कभी वाइब्रेशन, कभी एकदम सॉलिड हो जाता है. We're constantly experiencing that. And So we are not reacting all the time. बीच में हो जाता है. We are not reacting all the time. So what I experienced is like everything is happening together simultaneously. Like, you know, whatever is happening on your bodily sensation, there is a feeling also which happens at a mental level. Yeah. Okay, and there is a chetsik also which is going on with some kind of a aversion or some kind of a, so Yeah. everything is happening together as such. Yeah. So it is for us. What do you want to focus on? Okay. धातु मनसिकार, इसलिए वो शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है. धातु मनसिकार पब्बम. Giving attention to dhatu, forgetting about everything else. Okay. But like it is not like I wanted to forcefully, it is just happening automatically that like, you know, there is Yeah. And then other thing when you said about like, you know, observe your bodily sensation at the surface and also like, you know, focus your attention very minutely on that particular area, whether it is going
in. What I observed is, what I felt, I'm just sharing it. जब आप surface level पे आप देख रहे हैं, तो you could feel that gross, जैसे कि you have, I was doing it part by part, okay, scanning it as such. So when you take your attention on your forehead or whatever, you could feel that पहले तो ऐसे लग रहा है कि you're seeing the forehead only, like you're not seeing anything as such, and then there is a very surface bodily sensation, which could be gross or whatever it is. Then when you actually focus it very much, then it automatically goes in. When it goes in, it's more of a vayu, like, it's very wavelet kind of a thing, and it doesn't stay at one place. It just goes inside those, it just gets into your throat area. So then it's like, it's very it's very difficult to observe it as it, because it's just going in. Yeah. So what is the difficulty? I can't understand. नहीं, difficulty नहीं है. How do just listen? How do you know it is going in? Because what I felt, I'm just telling you. Like, No, when listen to the question carefully. The question has a meaning. When I ask you, how do you know it is going in? Attention is going in. How do you know it? You know it only through actual experience of bodily sensation. I'm coming to that only, sir. कि जब देख रहे हैं तो automatically वो अंदर से, like, it's just moving in, but I'm not able to figure out what is happening inside. It's just like it's just like a wavelet. और अब देख रहे हैं कि if I'm taking my attention on the shoulder or whatever it is, वो नीचे उतरता है, like, it's just it doesn't matter. All that doesn't matter really. I mean, it's only a question of raising our attentiveness. That's all. Raising our attentiveness, and what are we trying to do? We're not trying to find out kahan gaya, kya gaya. We're actually trying to figure out the quality of experience in terms of these four Mahabhutas. That's all. Yeah. Everything else is secondary. It was given, that instruction was given just to inspire us all that when we talk of body, there are various layers of body inside where the feelings would be different at different levels. Yes. And the dhatu drama is going on so rapidly that it becomes more and more clear कि मैं किसके पीछे दौड़ रहा हूँ, किस अनुभव के पीछे दौड़ रहा हूँ, जो इतना फ्रेजाइल है, इतना evanescent है कि प्रतिक्षण एक ही स्थान पर प्रतिक्षण बदलता जा रहा है. And in the process, in the technicality of क्या कहना चाहिए, meditation process, this observation of being aware of this happening at the body surface level and this is happening at the deeper level eventually helps us to sharpen our attention. Okay. If you don't get the mind, allow the mind to go here and there. Yeah, I was just coming to that while I was doing listen to carefully. Listen carefully. When we are seeing the attention going in, we don't bother about it, kahan ja raha hai, kya ja raha hai. We just focus on, अच्छा ये पृथ्वी धातु है, ये वायु धातु है, ये है, ये है, ये सब कुछ मिक्सचर हो रहा है, गड़मड़ हो रहा है, पता नहीं चल रहा मुझे, कुछ अनुभव हो रहा है, कुछ. So you can see that it's always in terms of the experience. And as our attention becomes proper and we become mansikara strong ho jata hai, so it becomes ekagrata. Ekagrata becomes strong. Then as the ekagrata is also a universal mental factor, it is in a very mild state initially. Then it becomes stronger and stronger. Then we can discern actually. We don't have to put an effort in discerning. We actually know all the phenomena which is happening. You can feel the attention going from here and coming out from here. You can actually feel it. So we don't have to give importance to that. Of course, in the beginning we feel wonderful. Oh, ye kya hua? And you can feel frightened. I remember when the first time my attention went from here to the brain, मैंने कहा अब तो कुछ हो ही गया, brain खराब हो जाएगा. You know, that's kind of thoughts which arouse. So we just become aware of them, and then you see how strong is the attachment to the body. You know, they all tell us how strong is the attachment to the body, and this is how we reflect on the experience. The whole idea is to reflect on the experience. The idea is not to figure out kahan attention gaya. It's just to see, and it becomes automatically evident. जैसे हमारा
एकाग्रता बढ़ती है, concentration बढ़ती है, then it automatically comes to the awareness. We don't have to do anything for specifically for finding out where the attention has gone. Okay. Okay. So while I was also the the mind rolled into thoughts. The moment the mind went into this thought spinning process, then I lost that awareness of the. या जैसे बंते जी के प्रश्न के उत्तर में बताया कि अगर हम विचारों में चले जाएंगे तो फिर अवेयरनेस उसकी हो रही है ना, विचारों की अवेयरनेस हो रही है. Our sati is directed towards the thoughts, then sati is not directed towards the body. We are not aware of it. It's a natural thing. But there is something which is already happening because the thought process is there. It is also interconnected as such. It's just that awareness is not going in that. Yeah, that is, we don't care. Okay. Because we don't know it. वो तो हमारी theory है ना, this is our concept कि कुछ तो हो ही रहा है. We're not aware of it. So we're not discussing concepts. We're putting it into practice our experience. So we acknowledge कि हाँ अभी मन जो है विचारों में चला गया. मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है बॉडी में. क्या मालूम, who knows, something wonder may be happening and body may have stopped. Who knows? We are assuming कि हाँ, unfortunately it is true. So चल रही है body, चल रही है. And then we suddenly realize, oh, मुझे तो ये देखना था, चलो अब शुरू कर. And that's how we work always. It's always with everybody like that. Even at the most rarefied stage of the mind, you can get into that thought process and get lost in the reactivity. That's fine. So we accept that also. That's how the mind is trained again and again and again to see the experiences as impermanent. That's the training, impermanent. And that if you get attached to them, you suffer. You actually directly know, yeah, you suffer. And then the third part is really the tough one. अनिच्छे दुःखधन्या दुःखे अनंत संज्ञा. That's really tough one. वो लगता है मैं ही तो सफर तो मैं ही कर रहा हूँ ना, इसमें कोई डाउट है क्या? कोई और थोड़ा ना कर रहा है. Now that's a tough nut to crack. So we have to really work on that quite a lot. So यहाँ पर मुझे है ना सर, when you're talking about this suffering as such, that time though I didn't realize it. Maybe next time when I don't experience it, I might feel that yes, this is, I would want to crave for it and I haven't got it as such. That probably that is how I would relate to it. क्योंकि इस process में तो पता नहीं चला कि दुख है करके. Yeah, that's वो दुख का जो characteristic है वो pleasant feeling के बाद मालूम पड़ता है. So because we can see that happening, we get attached to feelings, no? So we don't want to get into that domain at this moment. We are trying to see observing the nature of the body. I just mentioned it because you're talking about the interrelationship. Yeah. At this moment, we are focusing on the nature of the experience in terms of dhatus. So we clearly become established in that understanding. कि सारे अनुभव जो हैं, bodily अनुभव जो हैं, तो उनको धातुओं का प्ले है. अब उन धातुओं के प्ले के ऊपर जो फीलिंग हो रही है, फिर मैं उसका क्या करूंगा वो आगे देख लेंगे. नेक्स्ट सेक्शन में वेदना वाली जब बात करेंगे तो उसको देख लेंगे, फिर संज्ञा को देख लेंगे. सो अभी उतने पे ही फोकस करें लिमिटेड विजन में, उसको ठीक से समझ लें तो काफी अच्छा लगेगा. थैंक यू सर. मेरा भी कुछ ऐसा ही सवाल है. जैसे कोई शरीर में चुभन होती है तो ये क्या वायु धातु है या मुझे लगा कि वायु धातु होनी चाहिए. आई एम नॉट श्योर. आई एम ओनली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. See, it's a combination of number of things. इसमें never कभी ऐसा नहीं होता कि एक ही धातु. मैं कई बार निवेदन कर चुका हूँ, कई सारी धातुएं, चारों धातुएं, इनफैक्ट पांचों महाभूत साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं. They are not separated out. So when the two elements are of equal intensity, तो वो पता नहीं चल पाता किसका है. तो we can see the impact in terms of whether the heaviness is prominent or lightness is prominent or heat is prominent. So we have to really see that. But it's not, frankly speaking, it's not very crucial to be able to identify that.
yeah. Crucial That's is okay. to identify that it is changing हाँ, ठीक है. and that it is a natural phenomena associated of these. ये जो उसके 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें से कुछ है, उसका कोई सम्मिश्रण हो रहा है. That is the main issue to be understood and constantly to be appreciated. And सारा, जिसे मैं कई बार निवेदन कर चुका हूँ, सारी एक्सरसाइज इनसाइट डेवलपमेंट करने के लिए, which is to really change our way of looking at the body. Because it looks solid, इसमें कोई शक थोड़ा है. बाहर के संसार की हर वस्तु, जैसे सुबह में हमने शुरू में कहा था, उसको चाहे कोट किया था सूत्र को, कि बाहर भीतर everything which is of the nature of material is mostly looks solid. We're not able to see it in that sense. तो अब क्योंकि शरीर को हम investigate thoroughly कर सकते हैं, तो इसको हम समझते हैं कि ये, और खास तौर पे जब धीरे धीरे we penetrate into the body and we are able to get some more clarity on what is happening inside and outside, then this illusion of solidity starts breaking down. That is the most important aspect. ठीक है. नहीं तो थोड़ा सा मतलब एक क्यूरियोसिटी हो रही थी, मैंने कहा आई डोंट नो उससे और ठीक है, you can see that it could be चुबन है, सुई चुभ रही है. element and fire element usually. अर्थ चुबन जो है, चुबन. Earth and fire element. Fire is the element which gives heat. अच्छा. तो इसका अगर मैं इक्विवेलेंट देखूं ना, तो because these elements are related to, in Ayurveda, to the 3 doshas. Okay. So then the equivalence becomes clear. So when there is fire and water, then the fire element is associated with heating, or it causes kind of a pain. जो पित्त जो होता है, वाटर और फायर का कॉम्बिनेशन होता है. उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो एसिड है. एसिड मतलब जहाँ लगेगा तो चुभेगा. It will cause a burning sensation, feeling of that kind. So anything which is of that nature, as if an acid is touching the body or producing a pain, is generally seen to be of that kind. Okay. और जैसे खुजली हो रही हो, खुजली बहुत होती है, सबको ही होती होगी, मुझे भी होती है, तो खुजली कौन सा है? ये पृथ्वी धातु है, क्या कहेंगे उसको? हाँ, क्योंकि सॉलिडिटी का एलिमेंट सॉलिडिटी का एलिमेंट तो है, इरिटेशन का एलिमेंट भी है, पेन का एलिमेंट भी है, एंड मूवमेंट का एलिमेंट भी है. देयर इज एन एलिमेंट ऑफ मूवमेंट आल्सो. सो दे आर ऑल मिक्स्ड अप टुगेदर. So only when we have very penetrating samadhi would it be possible to realize, because it's happening at such a rapid pace कि हम उसके एवरेज फिनोमेना को देख पाते हैं, इंडिविजुअल को देख नहीं पाते हैं. इसलिए क्लियरली वो सारा समझ नहीं आता है. बट इतना जरूर समझ में आने लगता है कि ये इन सब का मिश्रण हो रहा है. The heat is associated with burning. It's associated with the excessive heat is associated with burning or pain associated with that. Generally. Sir, ये आपने सुबह जो कहा था to see the space element also. How does one see that? No, we can't see that. Because you can't see that. You really visually, when you look at the body, you can see हाँ नाक में जगह है, कान में जगह है. You can infer कि हाँ हमारे विंड पाइप में जगह है, जैसे भोजन नीचे जा रहा है, सांस अंदर जा रहा है. So you can infer from there. Visually, space can be seen, but more than, because it doesn't create any bodily feeling. It doesn't create any. It is a delimitation. Space का definition क्या गया? Delimitation of matter. It keeps the matter apart ताकि हमें मालूम पड़े. और
और सटल लेवल में कहा जाता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में डिस्टिंक्शन बनाने के लिए बीच में स्पेस एलिमेंट होता है, वो हम पकड़ नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ द रैपिडिटी विद विच फिनोमेना आर हैपनिंग। एक जैसे हम कह रहे हैं कि भाई चुभन हो रही है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ से अर्थ एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट, सो दे आर अराइजिंग टुगेदर, but there is also a element of space in between them, which we are not able to figure out. कोई भी मैटर का जो डाइसेक्शन होता है, मैटर के अंदर जब हम the very fact that we are able to cut a matter is because there is a space in between. So, and that space is referring to the, in modern science terms, you can say intermolecular space, interatomic space. We know that from science, there's a matter has large amount of space, 99% is empty. Science हमें बताती है, so what हमें लगता तो नहीं है ना वो, क्यों नहीं लगता? Because of rapidity with which the particles are moving. That's why it doesn't look like that. Perhaps this can be seen when we do कायन उपासना, और उसमें हम जब देखते हैं ना, तो जैसे कहीं पर भी कोई सेंसेशन इस तरह की हुई, पेनफुल सेंसेशन हुई, चुभन सी हुई, and you pass over it and you don't react, तो it just vanishes immediately. तो it change. So that is our idea. वो change होता रहता है. That's it's. So and our, it rises and ceases, arises and ceases. That is so the ये one. जो है, उसकी body हो हमारा रहा है, ध्यान जाना चाहिए, हमारा ध्यान उस ओर जाना चाहिए कि जो भी अनुभव हो रहा है वो समुदय होता है और वह हो जाता है, व्यय हो जाता है. That has to be. Now, that is very clearly understood. Yeah. So now this is the characteristic of every part of the body. कुछ चीजें पकड़ में आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, क्योंकि कुछ चीजों में ग्रॉसनेस बहुत ज्यादा है तो पता नहीं चलता है. जैसे जो बोन्स है, फॉर एग्जांपल, बोन्स आर वेरी हाईली अर्थ एलिमेंट, बाकी भी हैं, बहुत थोड़े थोड़े हैं, तो उनको उसको बोन्स के थ्रू ये फील कर पाना कि उदय और वह हो रहा है बड़ा मुश्किल होता है. और to be able to send your attention through the bones is quite a challenge if you look at it in a mechanistic manner, because जैसे क्या कि as one ages there is gout वगैरह जैसी चीजें जब हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं बोन्स में भी बहुत पेन होने लगता है उसकी वजह से. and that also I have seen कि अगर किसी पर्टिकुलर उंगली में मान लीजिए हो रहा है, ज्यादातर उंगलियों में होता है, पाँव की और हाथ की, तो फिर वो अपने आप if you don't really bother about it, I've seen it arising and it ceases, that happens even in the bone. If one puts attention, usually it happens. It's not necessary it will happen so kindly. Usually it happens. Sir, आपने ये जब स्पेस की बात की, तो I just want to just as an experience, I could not experience or see that space as such, but when you observe your breath, in and out breath, तो उसमें जो gap होता है after the breath comes out, and then when the breath, so is that the same thing, the gap and the space? Are you talking about that same thing? Because you just said कि nostrils or your वो तो मुझे I could not observe all that as such, but I could see the breath. There is a subtle gap. There is some the breath stops. Yeah, there is a gap, and again then there is a breath going in. So you could feel that कि वहाँ पे अभी रुक गया है. So are you talking about that space as such? That is a different phenomenon. This is a different phenomenon. That is a stoppage of the breath movement towards inwards, and we're not looking at it from the perspective of a रूपा. We're not investigating it as a रूपा. हम तो सिर्फ उसकी प्रोसेस के जो वायु धातु के कारण जो मूवमेंट हो रहा था वो रुक गया, और थोड़ी देर तक हम उस समय तक, जिस समय मूवमेंट नहीं हो रहा, हमारा ध्यान कहाँ जाता है, बॉडी पे कहीं ना कहीं चला जाता है, and it feels the body feelings. Sometimes they are subtle, sometimes they are gross, depending on the
attentiveness, you can feel, during the time, you feel the body. And then when the breath comes out, you become again aware, breath is coming out. So that's not a space element in that sense. Of course, you can say you're observing the space during that time, but actually we end up observing the body. That has been my experience, but you can check it up again. So when we are observing the body, तो वो कायानुविपश्यना ही हुआ ना sir, because Okay, yeah, it's all within Kayanupassana. There's no doubt about that. That we already settled. Huh? The observation of the body is Kayanupassana, and this is one of the dimensions of Kayanupassana is trying to observe the dhatus. In some cases, it is very evident that it is a heaviness, it is lightness, it is heat, it is cold. In other cases, there is a mix-up. It manifests in the form of pain, it manifests in the form of different types of pains, different types of unpleasant feelings, or different types of pleasant feelings. Flow happening, vibrations, subtle vibrations, tingling happening. So those are also within our experience, and they're also basically, if you look at it carefully, you'll notice there is some element of lightness in them, in the pleasant feelings. There is an element of lightness, there's an element of Vayu Dhatu, and you can generally see some element of coolness. So all those things can be perceived. मेरे 2 पॉइंट्स हैं. जैसे अभी रविंद्र जी ने कहा कि हमने एक पॉइंट पे ऑब्जर्व किया कि सेंसेशन हैं और हम जो है अटेंशन को आगे ले जाते हैं. तो जब अटेंशन आगे ले जाएंगे तो वो पॉइंट तो फिर आउट ऑफ अटेंशन हो गया, तो उसको हम अनित्य तो नहीं मानेंगे ना. जब हम उस पॉइंट पे देखेंगे कि जो थोड़ी देर रुकिए ना. हाँ, जब हम देखेंगे चेंज हो रहा है तब आगे जाएं. Certainly. So when we gloss over, then it doesn't center the impermanence. One has to wait till we actually observe the changeful nature. So in that, the process could be a bit slow. It's all right. हमें कौन सी जल्दी है? हाँ, जल्दी हमें कोई जल्दी नहीं है. दूसरा पॉइंट ये था कि जैसे अभी गीता जी ने बोला कि जब हम आंखें बंद करते हैं तो we can't observe the space. जैसे शायद आपने यही कहा, if I understood correctly, it can only be inferred or it can be assumed. That's all. It can't. आंखें बंद करके स्पेस को नहीं हम ऑब्जर्व कर सकते. Is that right? We're not trying to do that. मैं कहा कि space element does not produce a bodily experience. So correct. Finished. That's why the Lord only talks of 4 elements which are within experience. Right. There is an aspect of space experience, but that is not of the normal nature. That is a different connotation. So उसको इसमें छोड़. हमारे लिए तो normal नहीं है. ठीक है. Can leave that. ठीक है. Right. Yes, Apurva, you have something to ask? I'm sorry for asking a basic question, but जल धातु का अनुभव कैसे करें? जल धातु का अनुभव ग्रॉस लेवल में when we excrete liquids from the body, sweat or urine or other things, you can say, yeah, they were within the body. That's all. More than that, it is only mixed up. It always gets mixed up with earth element or fire element. So we see their effects in that manner. Okay. The presence of the earth element है कि वो हमारी muscles की form बना कर रखता है. It keeps them in a particular form. Okay? It gives them some element of flexibility and solidity. It doesn't allow them to disperse in each molecules. तो जब water element की कमी हो जाती है, the body shrivels up, सूख जाता है शरीर, and it can eventually start disintegrating. The circular parts of the body can start disintegrating, and water element की excess हो जाती है, then we get edema, swelling हो जाती है body में. So these things which are observable. Yes.
So when one is fewer, one can be sure fire element is in full spate. मैं पूछूं कुछ? आ Okay. रही है आवाज? हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, हाँ, मुझे ये पूछना है कि जैसे इसकी अनुभूति तो हुई, अग्नि धातु, पृथ्वी धातु, सबकी अनुभूति होती है और पता चलता है कि ये बदल रहा है, ये भी पता चलता है ये मेरा नहीं है, ये भी पता चलता है। लेकिन ये जितनी भी अनुभूतियां हैं ये किसको हो रही हैं? very good. किसको हो रही है? अगर मतलब खुजली आ रही है, भारीपन आ रहा है, ये सब देख रहे हैं, बदल रहा है ये भी देख रही हूँ, सब कुछ देखती हूँ कैसे बदल रहा है, क्या आ गया, वायु है। हमको लेकिन लगता कभी है कि कभी मैं मन देख नहीं रहा आता है हूँ, हमको लगता है कि मैं कौन देख देख रहा है, रहा मतलब हूँ। किसको ये अनुभूति हो रही है सब चीजों की? चलिए, कोई अब मेरे बाकी मित्र लोग बताएंगे। ये बाकी जो खंड है उनका भी कुछ काम है ना। रूप तो Actually, जानने वाला just कौन है जो जानता है? मैं जानता हूँ या कोई अच्छा अच्छा दूसरा खंड है जो जानने का काम करता है? Consciousness, हाँ हम्म, consciousness. yeah, Vijnana is the one which knows, and then it has various dimensions of Vijnana. It sees, it hears, and then associated with Vijnana are other mental factors. Vedana, which feels. हाँ, Okay. अच्छा And then we have the Sati, which becomes aware, which becomes mindful. हाँ, कि मुझे समझ नहीं आ रहा, that's Sati. मुझे मेरा मन भटक रहा है, so there is a Sati involved in it. मेरे मन में द्वेष जाग रहा है, that is Sati, which knows कि द्वेष जाग रहा है. So these are all aspects of Vijnana. ठीक है। So Vijnana dhatu is the key thing, which is जो हमको जागरूक करती एड है। मैटर से डिस्टिंग्विश करती है। एक मिट्टी का 60 किलो का एक पुतला बना दिया जाए और मैं सामने खड़ा हो जाऊं, तो उसमें फर्क यही है कि उसमें विज्ञान धातु नहीं है। अच्छा,